would like to, ma'am, speak about lip service to divinity. If we are just calling ourselves very divine and very spiritual and talking about it, it will get us nowhere, ma'am. Shakespeare has said, nothing gets nothing out of it. So, ma'am, we are just saying nothing and earning nothing because we are in the same place, compromising with the health of our citizens. I urge the government to send this bill to the Standing Committee on Finance for thorough examination and recommendations on integration, ma'am, and also coming out with a comprehensive policy which also gives us an enlightenment of what are the health risks, how much are we spending on tobacco use inflicted diseases, and how much we are earning out of it. If we make a comparison, I think it will show us that if we do away with this revenue, the health of the nation will progress, but we will also go towards financial positivity in a few years, ma'am. Thank you. Honorable Member Shri Harish Biran. Thank you, Madam. Madam, we are discussing the Central Excise Amendment Bill of 2025, which is an indirect taxation. What's the concept of taxation, particularly direct taxation, like income tax and all? There will be different slabs for different revenue people. Like till 4 lakhs, there won't be any taxation. From 4 to 8 lakhs, there will be 4 to 8 lakhs, there will be 5%. 8 to 12 lakhs, it will be 10%. Like. Therefore, the concept of taxation is that the people who earn more revenue will have to incur more tax. Now, unfortunately, in this particular bill, the increase in duty on unmanufactured tobacco from 64% to 70% and chewing tobacco from 25% to 100% will disproportionately affect the poorest and the most vulnerable sections of the society who are more likely to consume these. Now, these are all cheaper and traditional forms of tobacco, ma'am, and these are consumed by these vulnerable sections of the society. So a hike of 400% on chewing tobacco is regressive, making the poor bear the brunt of the sin tax. Now, I can understand the sin tax concept. Sin tax concept is actually brought in so that the health as well as the welfare of the society can be managed accordingly by putting additional burden, additional tax on these particular products. But problem, madam, is this. All measures to promote these products are actually in place now. The promotion of these products through advertisements, huge, big actors coming in, huge amount of money is being spent. So there is no restriction, there is no regulation as far as the promotion of these particular products are concerned. Now, while the government claims that this measure targets consumption, not production, the immediate hike in duty on unmanufactured tobacco from 64% to 70% directly impacts the primary product sold by the farmers. This will naturally suppress the market for the goods regardless of diversification efforts. Now, madam, the increase in duty on BD tobacco threatens the livelihood of lakhs of BD rollers who are largely women from vulnerable economic backgrounds. The claim is that this is not an attack on BD workers, is undermined by the economic reality of reduced demand due to higher prices. Where is the dedicated welfare and reskilling package for these workers, madam? Now, madam, if they had set apart a portion of this particular taxation for the purpose of relocation of these vulnerable section, who are actually the manufacturers and consumers, then one could have understood. Now, who consumes these products? Not the wealthy, not the middle class. It is the poorest laborers, migrants and rural workers. When the government claims this is a public health measure, why is the brunt of the punishment falling on the poorest? Now, madam, if public health were the real priority, why is the harshest taxation applied on the cheapest products used by the vulnerable, while the more affluent users of premium cigarettes see a smaller proportional burden? The truth is simple. This is revenue first and not health first. Thank you, madam. Honorable Member Shri Amarpal Maurya. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय। भारत आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नित नए संकल्पों को पूरा करने के लिए जाना जाता है।
और जब मनुष्य के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि की जब बात आती है तो नरेंद्र मोदी सरकार उसको और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के पूरे देश को सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने के लिए एक जो उन्होंने मानक तय किया है कि देश का चाहे वो किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति हो, सबके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करना इस सरकार का नैतिक दायित्व है। सरकारें पहले भी रही हैं और बहुत सारे सुधारों की जो जरूरत थी, उन सुधारों पे काम करने की जो आवश्यकता थी, देश की आजादी के बाद से 60 सालों तक 70 सालों तक इस देश के अंदर उन सुधारों की तरफ ना तो ध्यान किसी का गया, और ध्यान इसलिए नहीं गया महोदय कि व्यक्ति को उससे कोई लगाव नहीं था। अभी बहुत सारे जो है हमारे माननीय विपक्ष के सांसदों ने भी कहा कि ये तो जो है जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को ज्यादा दिक्कतें होने वाली है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि क्या उनके जीवन के साथ में खिलवाड़ करना कहाँ न्याय संगत है? अगर उनके जीवन की रक्षा को, उनके जीवन को बचाना है तो किसी भी स्थितियों में जाने की आवश्यकता है। और नरेंद्र मोदी सरकार आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 को जो तंबाकू उत्पादों पर जो करों में वृद्धि के माध्यम से आज तंबाकू कराधान को स्थिर बनाए रखने के लिए तंबाकू उपभोग में कमी लाने हेतु जन स्वास्थ्य प्रयासों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ये प्रस्तुत किया गया है। और ये विधेयक जो सिगरेट तंबाकू केवल एक आदत नहीं है, ये एक धीमा जहर है महोदय। यह जहर हर दिन हमारे समाज को, लोगों को बीमार करने के लिए, कैंसर जैसी बीमारी जो भयावह बीमारी, कभी जब उन अस्पतालों में जाकर के देखने का अवसर प्राप्त हो तो जरूर वहां पर जाने का जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। तब अनुभव होता है, तब एहसास होता है कि इस सिगरेट और तंबाकू के धुएं से, बीमारी से किस प्रकार की स्थितियां, वो जो गरीब परिवार है जिनके घर में इलाज की व्यवस्थाएं नहीं है और जिनका जीवन परिवार एक वक्त की रोटी के लिए सारा दिन मेहनत और मजदूरी करने में चला जाता था, उस परिवार का मुखिया जब बीमार हो जाता था तो उसको जो है दवाई के लिए, इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में ही संकल्प लिया था कि देश के जो है गरीब हो या अमीर हो या किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से ये उनके जीवन की प्राथमिकता थी। और उस प्राथमिकता में उन्होंने इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के एक बड़ी योजना पे उन्होंने काम किया। आयुष्मान भारत के माध्यम से लोगों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था को करने का संकल्प पूरा किया। और इतना ही नहीं महोदय, आपने, हम सब ने भी देखा है कि व्यक्ति को जब सरकार के माध्यम से किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त हो जाती है तो उसके जीवन में एक जीने की संकल्प की शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है। और जब तंबाकू की बात करते हैं, अभी हमारे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि इसमें जो है किसानों को नुकसान होगा। महोदय, मैं उस परिवार का सदस्य हूं, उस परिवार का बेटा हूं। मैंने अपने जीवन, मेरे घर में आजादी के पहले से तंबाकू की खेती होती थी। लोगों को शायद तंबाकू का पेड़ कहां होता है, नीचे होता है, ऊपर होता है, यह भी नहीं पता होगा। वो बात करते हैं तंबाकू के विषय में, किसानों का नुकसान। ये यहां पर गुमराह करने का काम करते हैं विपक्ष के लोग। 60 सालों तक देश के, समाज के लोगों को गुमराह करके अपनी सत्ता पर काबिज करने का जो पाप किया है, उस पाप की सजा जनता ने इनको जो है आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दे करके दिखाया है। और नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि देश के अंदर कोई भी ऐसा जो है प्रश्न नहीं है जिसको हम हल करके नहीं दिखाएंगे। उन्होंने जीवन में लोगों ने संकल्प किया है कि आज नहीं तो कल निकलेगा, हर प्रश्न का हल निकलेगा। मन में साहस विजय जो होगी तो मरुस्थल से भी जल निकलेगा। ये जो लोग के संकल्पना कर रहे हैं कि जो है उत्पाद में जो है आपने जो है टैक्स बढ़ा दिया है तो इससे जो है जनता को जो है क्या फायदा होगा, लोगों को क्या फायदा होगा? बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। जब उन्होंने गैस सिलेंडर बांटे थे तब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। जब उन्होंने शौचालय बनाए थे तब भी लोगों ने मजाक उड़ाया था कि जो है गैस का सिलेंडर दे देने से क्या हो जाएगा। और जब उन्होंने कोविड जैसे महामारी में
वैक्सीन का निर्माण करके पूरे देशवासियों को निःशुल्क वैक्सीन देने का काम किया था, तब भी विपक्ष के नेताओं ने मोदी वैक्सीन के प्रचारित करके पाप करने का काम किया था, लोगों की जीवन के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया था। और ये खिलवाड़ ये देश देखता है, ये देश कभी माफ नहीं करने वाला है। किसानों की बात करते, मैंने कहा मैं किसान का बेटा हूं, मैंने तंबाकू की खेती हमारी पीढ़ियां करती आई थी, हमने भी किया था। और इस जो है प्रावधान में, इस विधेयक में उत्पादनकर्ता पर, किसानों पर कोई एसआईआर को लेकर बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चुनाव आयोग ने अधिकारी आंटी जी, कितना जरूरी है ये एसआईआर? अरे जैसे अपने घर में साफ सफाई करना जरूरी है, वैसे ही देश के घुसपैठिया वोटर साफ करने के लिए ये एसआईआर जरूरी है। बचाने को असली वोटर का अधिकार जरूरी है एसआईआर। ये और एडिशन हो सकता है, तो ये पूरा सदन जो है आपके सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन असत्य बोल करके देश की जनता को गुमराह करने का कोई अधिकार नहीं है। आज देश के समाज में जो जनता है वो देखती है सारा सब कुछ, और जिस परिवार के साथ में ऐसी वेदनाएं हमने देखा है, इससे जो है सिगरेट और तंबाकू के एडिक्शन से लोगों के जीवन जो है समाप्त हो गए हैं। उनके परिवारों को उजड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है, और उस परिवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके जीवन में कैसे खुशहाली आ सकती है, ये दर्द अगर कोई सोच सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सोच सकते हैं। कहावत ने, जिसके घर नहीं फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। ये समाज आज जो है उन लोगों को चुनौतियों के लिए सामना करने के लिए तैयार रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि देश के अंदर किसी भी प्रकार की चुनौतियां आई, ये पूरा देश जो है मिलकर के लड़ा था। चाहे वो प्लेग की बीमारी आ रही हो, कोविड की बीमारी आ रही हो, चाहे जो है वो पोलियो की बीमारी आ रही हो, तो चाहे टीबी की बीमारी आ रही हो, इस तंबाकू और सिगरेट से भी जो है लड़ने का साहस भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाएगा। इसको भी पूरा करेंगे, ये संकल्प है जीवन का, और जीवन का संकल्प अगर नरेंद्र मोदी सरकार जब तय करती है तो उसको पूरा करने का लक्ष्य भी प्राप्त करती है। ये 2014 के संदर्भ के साथ ही, और आज तीसरे टर्म की सरकार जो हमारी प्रारंभ हुई है तब से हमने करके दिखाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश किया है। 2014 तक देश में केवल 7 संस्थान थे एम्स के, लेकिन अब 23 स्वीकृत हो चुके हैं। इसी तरह मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 2 गुना की गई, क्योंकि जब डॉक्टर रहेंगे तभी स्वास्थ्य के संदर्भ में उनकी रक्षा की जा सकती है। डॉक्टरों की संख्या बढ़े कैसे, तो मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ा गई। मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, उस उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आज 42 जिलों में जो है मेडिकल कॉलेज जो है पूरा हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता में है कि व्यक्ति का जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता है। और इसके अलावा आयुष्मान योजना के तहत करोड़ों लोगों को आज मुफ्त में सस्ते इलाज की व्यवस्था की गई है, जो अब तक 9 करोड़ से अधिक मरीजों का इलाज इसके अंतर्गत हुआ है महोदय। और ये मोदी सरकार इस जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को हटाकर उसके बदले जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बदलाव करना, राज्यों के हिस्सों की जो बात कर रहे थे, राज्यों के हिस्से को भी हमारे माननीय सदस्यों ने उसको दोहराया है। मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे वर्तमान में जो कुछ मानवीय पहलू भी हैं, जैसे स्वास्थ्य पर सरकार का खर्च घटता है। जब हम तंबाकू के प्रति, सिगरेट के प्रति जब आह्वान करते हैं कि इसको छोड़िए, तब जो है स्वास्थ्य का जो बजट होता है वो कम होता है। तंबाकू जनित बीमारियों के इलाज में बहुत महंगी होती है। देश के अस्पतालों में लाखों करोड़ रुपए केवल तंबाकू की बीमारियों से खर्च होते हैं महोदय। और जब लोग तंबाकू का उपयोग कम करते हैं तो अस्पतालों का बोझ घटता है, डॉक्टर और संसाधन अन्य बीमारियों पर ध्यान दे पाते हैं। दवाइयां और इलाज का जो पैसा होता है बच्चों की पढ़ाई के जीवन में काम आता है। सरकार का पैसा उनके विकास की योजनाओं में खर्च होता है महोदय। और इतना ही नहीं, जब नागरिक स्वस्थ हो जाते हैं तो ये देश जो है स्वस्थ होता है, और वो ज्यादा काम करके भारत के विकसित
सपने को साकार करने में मदद करते हैं। और जो काम का दिन उनका छुट्टियों में खराब होता था उसकी बचत होती है, और कर्मचारी हो या मजदूर हो वो स्वस्थ होते हैं तो अपने जीवन में अपने परिवार के लिए ज्यादा जीविकोपार्जन करने की क्षमता हासिल करते हैं। महोदय, मैं एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये जो कर की व्यवस्था है, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि देश के अंदर कर की पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि जैसे फूल से जो है मधुमक्खी रस ले लेती है लेकिन किसी भी फूल का कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसे नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां हैं कि देश के अंदर कर की व्यवस्था के साथ में देश के जो है जनता के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, उस रक्षा में हम सब सहभागी बने। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सदानंद महालू सेठ तानवड़े जी। Thank you, Speaker Sir. The Central Excise Amendment Bill 2025 is a necessary fiscal and public health intervention aimed at ensuring that the GST compensation cess is phased out. As was agreed collectively by states, tobacco products do not suddenly become cheaper and more accessible. The government intention is not to impose new burdens, but to preserve the existing deterrence against harmful consumption and maintain stability in pricing to prevent a rise in addiction, especially among the youth. Tobacco remains among the leading causes of non-communicable diseases, including cancer, heart disease, and respiratory illness, creating enormous social and economic cost for families, particularly for lower-income households who part with their savings merely to access treatment. International experience shows that price-based deterrence through taxation is one of the most effective tools to curb tobacco usage. This legislation reflects that evidence-based approach. Higher and stable taxation directly protects adolescents, students, and economically vulnerable population who are the most price-sensitive and therefore the most likely to initiate tobacco use when products become cheaper. Cheap tobacco is not about personal liberty. It is about creating lifelong addiction pathway for new generation. The bill fully respects the structure of fiscal federalism. The GST compensation cess was by design a time-limited instrument. Its conclusion does not dilute the rights of states. Under the Finance Commission framework, states continue to receive 41% of the divisible pool, a historic increase implemented under the Modi government, ensuring fiscal stability at the state level while maintaining national revenue balance. For Goa in particular, the legislation assumes special significance. The state is witnessing an upward trend in cancers and lifestyle disease linked to tobacco consumption, increasing pressure on district hospital and tertiary facilities including the Goa Medical College. By preserving tobacco price deterrence, this bill strengthens both prevention and long-term sustainability of healthcare system that serve Goan families. As a tourism-driven economy, Goa also bears the responsibility of promoting healthier social environments for residents and migrant workers, like especially in hospitality, transport, and service sectors, where occupational stress often increases vulnerability to tobacco addiction. Preventive policy today reduces future health burdens both for our state and the country. Importantly, this bill must not be misunderstood as being anti-farmer or anti-worker. The intervention target consumption, not livelihoods. Crop diversification schemes continue to support tobacco farmers in transitioning toward alternative and sustainable agriculture. With over 1 lakh acres already shifted nationally, providing that public health protection and farmers' welfare can advance together. Concerns regarding illicit trade have also been directly addressed. The government has strengthened the track and trace system, implemented digital tax stamping, and enhanced operational coordination between customs, GST authorities, and the Directorate of Revenue Intelligence. These measures have already resulted in record tobacco smuggling seizures, indicating growing enforcement capability under the NDA government.
The bill aligns India with global public health standard recommended by the World Health Organization and other international best practices, ensuring we do not lag behind developed nations in safeguarding public health. Ethically, the legislation also reflects balanced governance, collecting revenue from harmful non-essential products while easing burden on the middle class and keeping taxes low on essential commodities. It is both economically prudent and socially responsible. Or as India marches toward the vision of Vikasit Bharat, health protection must walk alongside economic growth. Addiction weakness productivity, disrupt families, and drains financially stability. Investing in prevention today preserve a healthier, stronger workforce tomorrow. The Central Excise Amendment Bill 2025, therefore, stands not merely as a tax measure, but as a strategic public health intervention, a fiscal stabilizing instrument, and statement of ethical governance, one that safeguards our youth, strengthens our healthcare institution, respects revenue, and advances the collective goal of building a healthier India. Thank you, sir. Thank you. Shri Mahendra Bhatt ji. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 के पर बोलने का अवसर मुझे प्रदान किया और मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, इसका उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में संशोधन करना है। यह धारा 3 के तहत लगाया जाता है। इससे भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रहित करने का प्रावधान है। विधेयक का मुख्य उद्देश्य तंबाकू के उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में संशोधन है। तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी बढ़ने से कर राजस्व की रक्षा होगी। सरकार के इस विधेयक का उद्देश्य जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद टैक्स को संरक्षित करने के लिए सरकार को तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाने से राजकोषीय गुंजाइश प्रदान करना है। इसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य और राजस्व को मजबूत करना। सरकार ने तंबाकू तथा तंबाकू उत्पादों जैसे हानिकारक वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगाकर साथ ही उत्पाद शुल्क में वृद्धि करके जन कल्याण की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। हानिकारक उत्पादों के उपयोग से हतोत्साहित करना इसका उद्देश्य। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू जिब्रा नहीं हो सकता। कार नई हो या पुरानी, पॉलिसी बाजार पे कंपेयर करके खरीदो और 30,000 तक बचाओ। इसलिए तू जिब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। इस विधेयक का लाना बहुत नितांत आवश्यक हो गया था। जब सरकार मध्यम वर्ग के सभी लोगों के लिए उनके कर को बोझ को कम करती है, गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं संचालित करती है, तो तंबाकू जैसे हानिकारक और गैर जरूरी उत्पादों से राजस्व संग्रह विवेकपूर्ण और न्याय संगत है। तंबाकू से कैंसर, हृदय रोग की चर्चा पूर्व में आई है। हृदय रोग, फेफड़ों के रोग, मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। हड्डियों का घनत्व को कम हो जाता है। फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता है। पेट में कैंसर बढ़ता है। सिगरेट पीने से फेफड़ों का कैंसर 90% फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। सीओपीडी की बीमारी 85 से 90% सिगरेट पीने से होती है। हृदय रोग और अस्थमा जैसे रोग इससे होते हैं। महोदय, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में तंबाकू निर्यात से देश को 12,589 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। पिछले 5 वर्षों में 87% वृद्धि निर्यात में हुई है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक है। और इस नाते तंबाकू का अगर हम उससे निर्मित सिगरेट और सबका रेट बढ़ाते हैं तो विदेशों में इससे हमारे राजस्व की वृद्धि होगी। ये एक अच्छा निर्णय है। गुजरात राज्य सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादक का राज्य है और अभी जो कीमत थी 238 से 250 रुपये पर क्विंटल सिगरेट का रहा। तंबाकू, पान मसाला में 28% जीएसटी को 40% किया गया। यह विधेयक सिगरेट, सिगार, हुक्का, जर्दा समेत अन्य तंबाकू उत्पादों पर शुल्क लगाकर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेगा। साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक पान मसाले पर लगाए जाने वाले क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन एकत्र करना है।
जुलाई 2017 में जीएसटी की शुरुआत हुई। उस समय राज्यों को होने वाले नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति उपकर लगाने की व्यवस्था थी, जो 5 वर्षों तक के लिए ही थी, लेकिन कोरोना के बाद इसे 31 मार्च 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। इससे कोविड-19 की अवधि के राज्यों के नुकसान की भी भरपाई होने की संभावना है। अनियमित तंबाकू उत्पादों और तंबाकू के विकल्पों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में वृद्धि होगी। अनियमित तंबाकू का शुल्क 64% से बढ़ाकर 70% होगा। एक्ट में प्रति 1000 सिगरेट पर 200 रुपये से 775 के बीच का उपचार शुल्क लगता था, वही अब बिल के तहत बढ़ा हुआ शुल्क प्रति 1000 2700 से 11000 के बीच रहेगा। चबाने वाले तंबाकू पर शुल्क 25% से बढ़ाकर 100% रहेगा। हुक्का या गुटखाऊ तंबाकू पर 25% से बढ़कर 40% होगा। पाइप और सिगरेट के स्मोकिंग मिक्सर पर शुल्क 60% से बढ़कर 325% निर्धारित किया गया है। मान्यवर, सस्ती सिगरेट गुटखा खाकर आज की जो पीढ़ी है, नई नवजात पीढ़ी है, इसको इस लत से बचाने के लिए एक बहुत सकारात्मक प्रयास है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि भारत में तंबाकू सेवन का जो प्रचलन 83.8% है, इसमें निश्चित रूप से इसके द्वारा कमी आएगी। यह एक रणनीतिक पीढ़ीगत निवेश है जो देश के एक स्वस्थ अधिक उत्पादक जनसंख्या सुनिश्चित करता है। महोदय, मैं पुनः बधाई देता हूं और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद। श्री धनंजय भीमराव महादिक जी। धन्यवाद उपसभापति जी। आपने मुझे केंद्रीय उत्पादक शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पर बोलने का मौका दिया। सभापति जी, ये बिल तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने के लिए लाया गया है, जिसमें तंबाकू का उपभोग और उपयोग में कमी आए, जिससे लोगों का स्वास्थ्य सुदृढ़ रहे, इसकी चिंता की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सिन गुड्स, पाप गुड़ जो शरीर के लिए हानिकारक है, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाना है। सर, पहले अनिर्मित तंबाकू पर 64% टैक्स था, अब उसे बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। सिगरेट पे 250 प्रति 1000 इतना टैक्स था, उसे बढ़ाकर 4500 कर दिया गया है। चबाने वाला तंबाकू 25% से बढ़ाकर 100% किया गया है। सर, 22 सितंबर 2025 से जो प्रभावी जीएसटी किया गया 2.0, उसके सुधारों के अंतर्गत सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पादक जैसे सिन गुड्स पर कर को 40% तक बढ़ाया गया है। तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क से प्रस्तावित वृद्धि, जिसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ मिलकर ये उपभोग को उल्लेखनीय रूप से हतोत्साहित करने के लिए अपेक्षा रखता है। सर, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ सबका विकास जो नारा है, उसे भी समर्थन करता है कि इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित मोदी सरकार ने तंबाकू और तंबाकू उत्पादों जैसी हानिकारक वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगाकर साथ ही उत्पादक शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि करने का जन कल्याण की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। इन सुनियोजित राष्ट्र कोषीय उपायों को उद्देश्य हानिकारक उत्पादकों को उपभोग को हतोत्साहित करना और साथ ही महत्वपूर्ण सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यय के लिए राजस्व बढ़ाना है। सर, जन स्वास्थ्य के लिए भी इसमें चिंता की गई है, जैसे कि सरकार अपने वादे के अनुसार जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर रही है। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पाद अचानक सस्ते और अधिक सुलभ न हो जाए। कीमतों में गिरावट और उसके परिणाम स्वरूप खपत में वृद्धि को रोकने के लिए प्रस्तावित 40% जीएसटी और उत्पादक शुल्क में इसकी अनुपात में वृद्धि आवश्यक संतुलनकारी उपाय में रूप में काम करेगी। ये सुविचारित दृष्टिकोण मूल्य स्थिरता बनाए रखता है, युवाओं और कमजोर वर्गों को तंबाकू के बढ़ते जोखिम से बचाता है
और राजकोष पर बोझ डालने बिना जन स्वास्थ्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। संक्षिप्त में यह सुधार निवारक क्षमता को बनाए रखता है, राजस्व तटस्थता सुनिश्चित करता है और राष्ट्र के स्वास्थ्य के हितों को सर्वोपरि रखता है। इसके उपवित्त को लोक कल्याण करने के लिए भी उपयोगी माना जाता है। ऐसे समय में जब सरकार मध्यम वर्ग पर कर का बोझ कम कर रही है और कमजोर परिवार को मुफ्त राशन प्रदान कर रही है, हानिकारक गैर जरूरी उत्पादों से राजस्व प्राप्त करना विवेकपूर्ण और न्याय संगत दोनों है। तंबाकू पर बढ़े हुए उत्पादन शुल्क के माध्यम से एकत्र किया गया प्रत्येक रुपया सीधे राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देता है। वर्तमान सरकार इसके अंतर्गत देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे एम्स, जिसकी संख्या 2014 में सिर्फ 7 थी, वो बढ़कर आज 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2013-14 में 387 थी, उसको 2025-26 में दुगनी होकर 808 बनाया गया है। इससे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा पेशेवरों को तक पहुंच बढ़ रही है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक रोगियों को पहले ही लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए का मुफ्त का रियासती उपचार मिल चुका है। राज्यों के राजस्व को नुकसान पहुंचाए बिना ये स्थिरता लाता है। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से पुनर्निर्धारित केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बदलाव राज्य के हिस्से में कमी नहीं बल्कि एक प्रशासनिक पुनर्निर्माण करता है। क्षतिपूर्ति उपकर हमेशा एक समयबद्ध तंत्र था जिससे सभी राज्यों ने सहमति व्यक्त की थी। सर, धन्यवाद। सर, धन्यवाद। डॉक्टर शिव कुमार मित्तल जी। सर, वो हर सिगरेट के पॉकेट पे लिखा होता है टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, पर सर मेरा कहना है इट इज इंजूरियस टू नेशन। टोबैको इज इंजूरियस टू नेशन। मैं कहना चाहूँगा सर, फक्र होता है ऊंचाइयों को छूने में, बस उसमें दफन किसी की लाश ना हो। जुनून हो मेहनत से आगे बढ़ने का, बस धुएं में जकड़ी कोई दास्तान ना हो। सबको अपने सपने का जहां मिले, बस आंसू में डूबी किसी की मां ना हो। फक्र होता है ऊंचाइयों को छूने का, बस उसमें दफ किसी की लाश ना हो। सर, हम टोबैको से 75,000 रुपये सालाना कमाते हैं या कमाने जा रहे हैं, पर सर टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम पे सिर्फ 50 करोड़ से खर्च करते हैं, यानी टोटल कमाई का 0.07%। इतना कम क्यों? सर, हमारे क्रिकेटर्स, हमारे सेलिब्रिटीज जो खुद को रोल मॉडल कहते हैं, हम लोग समझते हैं, लोग युवा समझते हैं, वो सूरोगेट ऐड के जरिए इलायची के नाम पर जहर बेचते हैं। सर, अभी एक नया बिल अलग से आ रहा है, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी, बहुत बढ़िया, हम इसका समर्थन करते हैं। जब वहां आ सकते हैं तो यहां भी हम इस सेस का आम आदमी पार्टी समर्थन करती है, लेकिन मैं चाहूंगा, अभी मेरे इस तरफ के साथियों ने बोला कि ये जो पैसा आएगा ये टोबैको की दवाइयों की जो बीमारियों से रोकथाम के लिए खर्च होगा। मुझे लगता है इस सभी पे सारे सहमत हैं हम। तो सर, मेरी माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो ये सेस लगा रहे हैं, हम इसका नाम हेल्थ सेस अगेंस्ट टोबैको क्यों ना कर दें, जैसे हम हेल्थ सिक्योरिटी अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी लेकर आ रहे हैं। सर, सिर्फ आधा मिनट लूंगा मैं। सर, 75,000 करोड़ या जितना भी आएगा वो सारा इस खाते में डाला जाए, ये मेरी पुरजोर निवेदन है मंत्री जी से। सर, जो ट्विन पैक का नया कल्चर चला है एडवर्टाइजमेंट्स का, उस पर सख्ती से नियंत्रण लगे ताकि बच्चों को बेवकूफ़ ना बनाया जा सके। सर, सिगरेट की जो ऐड है उस पर पूरी तरह से नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। एक सर छोटी सी बात, एक सर बड़ी अच्छी स्कीम है भारत सरकार की, केंद्र सरकार नेशनल हेल्थ मिशन पर राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन
Thank you very much, sir. After the introduction of the bill, I understand about 27 honorable members have spoken on the subject. While just giving a broad introduction to what this exercise is about, I'll move to respond to many of the questions which honorable members have raised. So the Central Excise, actually Central Excise Act of 1944 has a schedule, fourth schedule, in which the rates are prescribed. And within the fourth schedule, there is a section 4 in which the rates of the tobacco products are mentioned. Now with the levy of the cess is no longer there under the GST scheme of things, meaning the compensation cess, the compensation cess is no longer going to be levied. There was a necessity to get back the excisable items back into the central government's Excise Act. Just to explain it a bit better, sir, when in 2017 GST was brought in order to give states the compensation which was agreed upon, so that they will be able to have their income supplemented just in case it fell from a assured level. The central government had said that it shall, just as a token, collect very minuscule amount for those items which come under the central excise, such as tobacco products, and completely gave it to the GST to collect compensation cess, because they were under the 28% rate, and over and above that, compensation cess was also being collected. Even at the point in time of introduction of GST in 2017, by law it was provided that this compensation will be given for the states for 5 full years. Now, at the end of the 5 full years, compensation cess was to come to a close. Now, even before the 5 full years could be completed, unfortunately, we had the COVID coming, and during that time, no revenue could be raised, but yet the compensation had to be given. So, it was decided that there would be a loan arrangement made in which the central government would arrange it and have it back to back given to the states, and that loan will also get paid back through the collection of the cess, compensation cess, meaning till 22 you would have to give them the compensation, give the states the compensation through the collection which comes from the compensation cess. After that, because during the period of 5 years itself we had to borrow money to pay this compensation cess, we had to extend compensation cess collection till March 26. Or if we were able to pay back all the loans and interest which we borrowed to pay the states the compensation during and immediately after the COVID period, if we are able to pay that back well before March 26, we will close collecting compensation cess. Now, in the last GST Council, this was discussed in detail, and as was agreed earlier also, the compensation cess collection will come to a stop, probably end of December. This was very clearly discussed, and now that the compensation cess comes to a close, the central government, which gave the items under the cess, such as the tobacco products, to the GST Council to raise revenues for compensation, naturally is got to be brought back. Let me assure here itself straight away that the tobacco products will still be taxed under the demerit category at 40% in the GST frame of things.
They will still be taxed at 40%. But there will not be a compensation cess. But when it was under the compensation cess, like now till December 31st probably, they were under the highest rate available then, 28%, and over and above which a compensation cess was added. Together, some of the items in cigarette would have been at 53%, some were at 60%, some were at 72%, some were at even 88%. Now that the 28% has gone away from GST, all those demerit goods have gone to 40% tax. That's the structure in the GST. Now, therefore, the items cannot be taxed beyond 40% even if they are demerit. But the incidence of tax on tobacco and tobacco-related products have therefore come down. You have no compensation cess. The highest rate that you have in GST is 40%. And as a result, it gives an impression that the government has allowed lesser tax on tobacco, and therefore it's going to become affordable. The intent is not that, sir. So within the GST scheme of things, it continues to be at the highest rate. But now that the compensation cess cannot be collected and we have to come back to excise, the Central Excise Act will now back again get the cigarette items, and retaining largely the incidence of tax, we are imposing the excise on these demerit goods. That's the sum and substance of the story behind why now excise is coming in. So in general, I also want to highlight the fact, since the intent is not to tax tobacco and tobacco products lesser than what prevailed earlier, it's important for us and this August House to recognize the fact that during the GST period, tax on tobacco-related products, even with the cess being there, could not reach the benchmark which the WHO sets every year. Meaning they have what is called as tobacco affordability index of tobacco products. They have an index called affordability index of tobacco products. They monitor the rates which prevail all over the world and point out where the rate is well below the benchmark they set. And therefore they say you're making tobacco affordable, meaning people are not being disincentivized from buying cigarette unless you keep it at a certain level. And there are several countries which keep changing the tobacco rate, linking it to inflation, and even otherwise annually they keep changing the rate so that the rate is itself a disincentive so that people don't end up buying more cigarettes, because now that it's become cheaper. And in that context, 80 countries revise tobacco taxes annually, as I said, linking to inflation and also looking at their periodic excise schedules. Australia increases tobacco's excise automatically by CPI plus an additional 12.5%. New Zealand does the same exercise plus 10%. Philippines, Turkey, South Africa, all of them also do an automatic escalating way of pricing tobacco products. EU member countries do 60% over and above the CPI on a weighted average basis, and many countries do exceed 70 to 75%. So what we need to do in India is to see if we are making tobacco affordable, which we don't want to. We want to make sure there is a deterrent, and therefore at the moment, India's total tax incidence on cigarette is approximately 53% of the retail price, which is substantially lower than the World Health Organization's recommended benchmark of 75% of the retail price, or it is even more than 75%. So as I said, many countries impose over the CPI 80, 85%, 75 to 80%, and so on. So we want to keep that in mind
and therefore the rate fixation has happened, keeping WHO's benchmark as well, and making sure that we don't make cigarettes affordable. But here, there's one element, I think one of the honorable members has spoken in brief about BD, but I want to highlight the fact, sir, that whilst doing this, even BD comes back to excise. But there is no change in tax incidence of BD. Considering the fact that the workers who roll BD come from a lower economic strata of our country, we had made sure that nothing goes to hurt the livelihood propositions but of the BD rollers, but equally continuing with very many schemes which will give them health awareness. I'll read that out a bit to highlight, sir. When I say there's no change in the tax incidence of BD, I just want to put it on the record here so that honorable members will appreciate. In the current regime, which will continue till the end of this month because of the compensation cess, which is the scheme of things since 2017 when GST was brought in, the GST rate, as I said, on BD is 28%. And there is this NCCD, which is a calamity-based collection that we do. For handmade BDs, for every 1,000 units, we charge 1 rupee. If it is a machine-made BD, then for every 1,000 units, we charge 2 rupees and not more. Together with that, as I said, basic excise duty continued as a token gesture even during the GST regime when the compensation cess was being collected. The central excise was kept at a very nominal rate. And how nominal is nominal? 5 paisa per 1,000 units. Not 5 rupees. 5 paisa per 1,000 units, which is man-made, and 10 paisa per 1,000 units if it is machine-made. So this is what prevails currently. Exactly what prevails now is what is going to prevail after excise comes into play. So the proposed regime will have BD at 18% as recommended by the 56th GST Council. That is why when the next generation GST was announced, a lot of people said, what have you done? GST BD rate was at 28, over and above that there was some cess, now minuscule cess, but over and above that, so 28% is the rate at which BD was and continues to be till 31st. But we had to move it along with very many items because 28 is not available anymore as a rate under GST. So every item moved to 18 unless it was a sin item which went to 40. Cigarettes went to 40. BD did not go to 40. It, on the contrary, moved to 18 because there was no more 28. So from 1st January or whenever this new thing comes into play, in GST it will be at 18. So a lot of people question saying you've reduced the price because you've reduced the tax on BD. But that is because we didn't have 28, so it went to 18. The NCCD portion continues to be the same as 1 rupee for every 1,000 BDs, handmade, and 2 rupee for every BD for 1,000 units if it is machine made. That continues as it is. And the basic excise duty, where it was 5 paisa per 1,000 and 10 paisa for per 1,000 machine made, will be at 10%. Together, the incidence on BD will be the same. It shall not worsen the situation or it shall not have a negative impact on BD rollers. That's an upfront statement I want to offer. So now I come to specific points which many members have raised. I want to address them. Pramod Tiwari ji, while speaking, apparently has said that the bill is silent on tobacco farmers. And what will happen to the workers
who are working in the tobacco related, in the tobacco cultivation and so on. And also he has observed that this is against devolution. I want to first correct this impression, sir. This is an excise duty. It's not a cess. We'll talk about cess tomorrow, day after, whenever it comes. But this is an excise duty. This excise duty, by the very nature of taxable pool, will join the taxable pool and it will be devolved per the Finance Commission's recommendation to the states. It is not against devolution, it joins the taxable pool. That is one thing. Second, sir, there are several schemes from the government to take care of tobacco farmers. Now, this scheme has been on since 2015-16. It's called Crop Diversification Program, Rashtriya Krishi Vikas Yojana, and it runs in 10 states, major tobacco producing states, where farmers are encouraged to move from tobacco to other crops. I'll read out the states where this is happening: Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh and West Bengal. In all these states, sir, has it had an impact? Yes, it has had an impact, because over 1.12 lakh acres of land has shifted from tobacco growing to other crops. And I'm talking about a period between 2017-18 to 21-22. So what are the crops to which they moved? Each state focused on its own area, but largely sugarcane, if it is an irrigated area, sugarcane, groundnut, oil palm, cotton, chili, maize, onion, pulses and turmeric, if it is irrigated. If it's non-irrigated area, or if it is a state-specific subject, I'll read out the example of 3 states. Telangana tobacco growers moved to producing Bengal gram and chilies. Odisha, they moved from tobacco, they moved to vegetable growing and maize. Karnataka, they moved from tobacco. अरे रील सब ढीली पड़ जाएगी अगर टाइम पे टीका नहीं लगवाया तो। अरे ये फोन छोड़ और टीका लगवा कर ला इसे। हाँ तो ठीक है, आज हेल्थ सेंटर चल के रील बनाएंगे। आपके बच्चों के भविष्य की सीढ़ी ढेर सारे नन्हे कदमों से बनती है और इस सीढ़ी का पहला कदम है टीकाकरण। टीका है अच्छा। Crops. Equally, are we giving any attention to BD workers? Sir, 49.82 lakh registered BD workers are there in this country. Now, for them, labor welfare scheme under Ministry of Labor and Employment is implemented across the country through labor welfare organizations situated in 18 regions across the country, including welfare of the BD workers and their families. What are the specific schemes which are being given for BD workers? The healthcare facilities through 10 hospitals and 279 dispensaries. Reimbursement expenditure for specialized treatment. Sometimes it is now covered under cashless, paperless, but reimbursement also happens when they go for cancer treatment, when they go for tuberculosis, they go for any heart diseases, or even for kidney transplantation. So their reimbursement method works. Financial assistance is also given for education of children of BD workers from class 1 to college or university, and the amount given ranges from 1,000 rupees to 25,000 rupees per student per annum, depending upon the class in which the child is or the course that the child is doing. Other than this, subsidy of 1.50 lakh per beneficiary for construction of a Pakka house is given under the revised integrated housing scheme, which commenced from 2016. RHS has been converged with Pradhan Mantri Awas scheme. Other than this, of course, you have PM Shram Yogi Man Dhan, PMSYM, Suraksha Bima Yojana, Jeevan Jyoti Bima Yojana, Jan Arogya Yojana, public distribution
distribution system happens, Gramin Kaushal Yojana, and also the Swanidhi, Deen Dayal Antyodaya Yojana, and so on. So all these schemes also aim at the BD workers. Pramod Tiwari ji again has mentioned that no mention of health and related expenditure is made here. I want to just highlight, sir, probably member Sagarika Ghosh also mentioned this. Health and wellness have been a key focus of our government. Prime Minister Narendra Modi has been very keen that in the last 11 years, I can read out the amount being spent on health. The last year of UPA government, 2013-14, 33,278 crores have been spent for health ministry's budget allocation. Whereas 25-26 this year, the BE, I'm comparing the BE with BE, 99,858 crores have been allotted, 3 times more. So, other than that, between 2014 and 2021-22, 14-15 and 21-22, government health expenditure as a percentage of GDP rose from 1.13% to 1.84%. Government health and expenditure is a share of overall government spending also increased from 3.94 to 6.12%. Between 2014 and 22, per capita health spending tripled from 1,108 rupees to 3,169 rupees. This is per capita, sir. Other than that, of course, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana gives protection for nearly 55 crore beneficiaries, 9 crore plus, over 9 crore hospital admissions have been entertained under that, resulting in 1.3 lakh crore or even slightly more worth of free treatments. So healthcare has taken a good priority in this government. More than 16,000 Jan Aushadhi Kendras now present in almost all the districts of the country provide generic medicines at affordable prices, often 50 to 90% cheaper than the market rates. Then under the mission Indradhanush, 5.46 crore children and 1.32 crore pregnant women have been vaccinated against 12 diseases. This targeted initiative actually has contributed to a significant decline in the maternal mortality rate from 130 per lakh live births, that was in 2014 to 16, to 80 in 2020. So the last 11 years, sir, the government has approved or established several new aims across the country and in fact across several states, and set up also very many medical colleges, including the first ever AIIMS in the Northeast located in Assam. MBBS seats have been increased to 1.18 lakh and 74,000 PG seats have also been added since 2014. So tobacco products are being sold near schools in Tamil Nadu. Was Sri Thambidurai, I can't see him here. He had observed it, but I need to say that there is an act from 2003, KOTPA, which is the Cigarette and Other Tobacco Products Act 2003. A provision has been made to prohibit the sale of tobacco products to an individual below 18 years, and this would apply to 100 yards around a school that it cannot be sold. Guidelines of the Tobacco-Free Education Institutions guidelines were also issued in 2019. So I would want to highlight to Honorable Member Thambidurai that GOA, Government of India, conducts Tobacco-Free Youth campaign every year since 2023. Maybe greater awareness is required in Tamil Nadu.
Sri Shivadasan ji had raised this thing about lottery. I'm not sure I should be answering this here because this bill has nothing to do with the lottery system, sir, but he has raised it. I just want to highlight the fact, sir, that the 56th meeting of the GST Council, which was held this year on 3rd September, when the new generation GST decisions were made, which is much welcomed by everybody. The GST at that time had recommended, the council had recommended increasing the GST rate on supply of lottery tickets from 28% to 40%. As I said, 28 doesn't exist anymore. Lottery cannot go to 18, so it went to 40. But of course a delegation came and met me saying from Kerala, no, this will affect because a lot of people who are selling these tickets are poor people and so on. So this decision of the GST Council was unanimous. In Kerala, sir, the lottery is run by the state government. The supply happens within the state, and therefore there is no IGST also involved. It's all entirely state governments. And the SGST collected entirely is retained by the state. And 50% of the GST collected will go to the 41% will go from the CGST proceeding to the state. Now, it's a very considerate and very, humanitarian touch that these people will suffer. But the tax is on the state government. It's not on those people. And the state government gets the revenue. I'm sure the state government will be broad-minded enough to please give something to the people now that everything is coming down and take care of their own citizens, because that is something which is well within the state government's limit. Sir, the other most important point which I wanted to, there are few more replies that I have to give, sir. Sri Girirajan, I'm not sure he's here now. So he said middle class is unhappy, there is high inflation, salaried class is being penalized. So this is an excise duty, tax is being imposed on cigarette smoking. I am not sure how I'll be able to answer that. Sir, and also, inflation is high. So inflation, CPI is below 3%. Below 3%. And in the last 6 months, it has remained well before the tolerance limit which is given under the FRBM. So even now, if I have to answer on high inflation, it's a bit difficult. We can always reserve it for the day when really inflation is much higher than the forbearance limit. And Honorable Member Arun Singh ji has spoken elaborately about the GST next generation. So the cut actually, GST cuts have actually benefited people on their daily use items. I've been going, wherever I go to the local shops and ask them, are customers coming, are they buying, are they asking questions about how much the rate has come down on that particular commodity that they want to buy, or you are helping them to understand. Everywhere I'm getting reports that yes, the rates have come down. So I just want to, in fact, the last visit was in your town, sir. Not so much Tirupur, but in Coimbatore. And the grocery shop, people do tell me that people are. In fact, I went to the grocery shop owner's house because he said, not just my shop, please come home. There he had assembled a group of people from that neighborhood. One small family, sir, said my monthly grocery bill used to be something like 4,280. Now it's actually come down to 3,100 rupees. And they were actually happy. There are, you please go check it up with the people. This is Varun. Varun calls himself a foodie. जो भी हो viral, Varun करेगा उस पे attack until भटूरे ने किया counter attack. That's when Varun realized foodie बनने से पहले health insurance लेना smart है. Star Health Insurance.
Insure now. In this debate of excise, where I'm going to impose the excise duty on cigarette smoking, suddenly if I have to answer these issues, I thank actually Shri Arun Singh ji, who's spoken on detail about it. Sir, again, the issues raised by Honorable Member Sagarika Ghosh pertain to the Manrega, very valid, very relevant, very sensitive, important for West Bengal. We've answered this several times. Now I'm answering on excise, but the issue has been raised. So I will answer it, sir, just as I've answered a member from Tamil Nadu. Sir, as per the Manrega Act 2005, it is the responsibility of the state government to ensure transparency and accountability in the implementation of the scheme. Based on central team's inspection reports highlighting implementation issues, the Ministry of Rural Development had sent several communications to the state saying, please do the rectification. I am told there's still some rectification pending. Consequently, the funds were stopped since March 2022 under Section 27 of the Act due to non-compliance with the central government's directives. The latest action taken report, sir, dated 11th July 2025 this year, the West Bengal state has reported completion of recoveries of 4.81 crores identified by the central teams in 4 districts, which means the central team pointed out something, after which the correction and rectification work is started. They've collected 4.81 crores from 4 districts, along with the status of the disciplinary action initiated in this regard. This itself, I think, is an admission that things were misused. All right, sir, of Manrega. Subsequently, No. You got your own opportunity to speak now. Minister is You're not interested in the reply. After my giving the reply, you raise more issues. No. Nothing will go on record except minister's reply. Sir, ministry subsequently, thank you, sir. Please do listen to the reply and then you may permit them to ask more questions if you want, sir. Subsequently, the Ministry of Rural Development, again a letter on 11th November 2025, requested the state government to furnish a comprehensive action taken report with regard to the total districts of the state along with the details of financial recoveries made, disciplinary proceedings which have been taken, criminal action, and all other corrective measures undertaken by the state. Sir, between 2006-7 to 2013-14, the central funds which were released to West Bengal under Manrega stood at 14,985 crores. 2006-7 to 13-14. Now, between 2014-15 to 21-22, comparable number of years, our government has released 54,416 crores, which represents a 261% increase in Manrega alone. 14,985 compared with 54,416. 261% increase, irrespective of the fact that we are still asking them for taking action where things have been pointed out as not right. So the commitment of the central government as regards Manrega beneficiaries in the state of West Bengal is absolutely there, and we expect that this transparency with which we want to handle it will continue. Now, further, the honourable member has said Central Road and Infrastructure Fund is not being transferred. I want to just highlight, sir,
24-25 RE, 25-26B, the government has so far transferred 13.25 lakh crores since 2002 to 2003. 2002-2003 down to 2025-26. 13.25 lakh crores has been transferred under this head, Central Road and Infrastructure Fund. How much was collected, sir? Because it's a cess? No, it's a fund collected. 12.62 lakh crores were collected in the same period. Collection is 12.62 lakh crores. What went as under this head to Bengal is 13.25 lakh crores. No, total. No. She is not yielding. You please, please, my dear. Please, No, you will get your chance when you are speaking. It is for the minister to reply now. I'll finish, sir. I'll finish and then you can. Yes. My dear. You understand. Sir, I'm talking to you only, sir. Further question was raised. No. Oil industry. No sound from this side. No cross talking. No. You please sit down. Let her complete her reply. Please. Sir, thank you very much, sir. I want the other point which was raised by the honorable member was Oil Industry Development Fund, OIDF, has not been transferred for appropriate usage. I want to say, sir, an action taken note was conveyed to the PAC, Public Accounts Committee, that since the government has been financing various activities under the budget, nothing will go on record except the minister's reply. An action taken note was conveyed to the Public Accounts Committee that since the government has been financing various activities from the budget which qualify as development of oil industry within the purview of the Oil Industry Development Act of 1974, and in view of the emergent situation of energy security, such expenditure is likely to increase in the near future. It was therefore further stated that these activities have been financed through the resources of the GOI, of which cess under the Act is a part. But to avoid further confusion, government has decided to constitute Oil Industry Development Fund as per the provision in Section 18 of the Oil Industry Development Act of 1974. The fund has been created in public account of India and has been operationalized from 24-25, financial year 24-25. An amount of 17,730 crore and 19,376 crore was provided for transfer to the OIDF, which is the Oil Industry Development Fund, in the RE of 2024-25 and in BE of 25-26 respectively. So on the Oil Industry Development Fund, I've given you what has happened and how much fund has been transferred. The fund creation also to enable specific oil development activities to be funded from the fund rather than from the budget. So that has been explained, sir. So next, also from Honorable Member Sagarika Ghosh, is don't neglect West Bengal. So I want to say, sir, don't neglect is not necessary at all. I'll tell you the kind of things we've done for West Bengal. Sir, West Bengal has never been. No, they don't want to hear this. No. Madam, this is not correct. She said you can ask after. No, I'm not saying anything. You please sit down. You have elaborately you talked on this bill. You please be seated. Let the minister continue her reply. Sir, West Bengal has never been. Nothing will go on record except the minister's reply, please. Sir, West Bengal has never been ignored by this government.
In fact, it is Trinamool Congress which is hurting the growth of the people of West Bengal. I repeat this. It is in fact the Trinamool Congress which is hurting the growth of West Bengal. Sir, I'll give you a classic example for that. West Bengal withdrew from Ayushman Bharat scheme in January 2019. Is that good for Bengal? Industries are leaving West Bengal. Only recently, I answered a question to one of the honorable member of parliament about the number of industries which have left West Bengal. In fact, off the cuff, I can even tell you, sir, subject to correction, 1947, when India got its independence, the contribution of West Bengal for industry in the country's GDP was somewhere in the range of 27%, subject to correction. I can get you the papers. But today it has come down to minimum 3%, sir. Is that West Bengal government? Sir, industries are leaving West Bengal. I've answered a member of parliament's question. I wish I can get that copy so that I can read the exact numbers. I wish my people in the gallery can give me the letter so that I'll present it to the table office here. You need not answer to them so elaborately. People are suffering. Go back to Sir, your... people are suffering from It's not correct. When she was speaking, when she was speaking, she was not disturbed by anyone. Don't do this. This is becoming your habit. That is not good. Sir, nothing will go on record except minister's reply. Sir, I will give you data. Equally, I'll give you my personal example, sir. In my family, there's a member who lives in Kolkata. They wanted to just whitewash their house and paint the doors. They got the paints. They wanted to do it. There were people who came to the house. Minister, kindly be specific. No need to answer to all their observations. You please address to me. I'm talking to you, sir. Sir, 5.94 lakh crores has been given under tax devolution since 2014. Till now, 4.4 times increase versus 1.34 lakh crores given during 2004 to 14. 2004 to 14, sir, 1.34 lakhs. Now, since 2014, 5.94 lakhs have gone to Bengal under tax devolution. So, comparison देखिए sir. Then, Finance Commission did not tell us to give SASKI funds, which is given for 50 years, interest free. 24,000 crore has gone to Bengal under SASKI, sir. Not under Finance Commission recommendation. Prime Minister Modi's desire was recovery after COVID should be good. So, Bengal received 24,000 crores. When the minister is replying, 11 medical colleges have been opened in West Bengal, sponsored by centrally sponsored scheme. That is our scheme. 11 medical colleges. Railways, sir. Under the NDA government, West Bengal received a record budgetary allocation of 13,955 crore for railway projects in the year 25-26 alone. Just 1 year. It is over 3 times the average outlay of 4,380 crore during 13,000, sir, which is over 3 times the average outlay of 4,380 crore during 2009-14, sir. I told you, sir, about the number of companies which have left West Bengal. I give you the data, I will authenticate it, I have no problems. From 1st April 2011 to 2025, 30th September, 448
listed companies have left Bengal. 6,447 companies, unlisted companies have left Bengal. Madam, I think we can stick to the Central Excise Amendment Bill alone. This is a data that I'm giving. Honorable Minister, I think you can now stick to the Central Excise Amendment Bill. Please, you address to me Yes, and sir. conclude. Other than that, sir, 101 Amrit railway stations, sir. 101 Amrit stations at 3,847 crores are being developed. 1,650 kilometers have been electrified. 98% have been electrified in entire Bengal. 2,000 kilometers, 2,300 kilometers of national highway constructed in Bengal since 2014. Sir, other than this, Bagdogra Airport development in Siliguri at an estimated cost of 1,409. Honorable Minister, you please reply only regarding the Central Excise Amendment Bill. Please Going any conclude. further, sir? Yes, So please the excise conclude. bill Yes. will have to be considered by this honest August House and passed. Thank you very much. The question is that the Central Excise Amendment Bill 2025 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up class by class consideration of the bill. Class 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 2 is adopted. Class 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman ji to move. To move. Sir, I stand to request that the bill be returned, sir. That the bill be returned. Motion moved. The bill is that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. Special mentions, Sri Sanjay Kumar Jha. पति महोदय, मैं प्राचीन नालंदा महाविहार विश्व की प्राचीनतम ज्ञान परंपराओं और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक आदान प्रदान का प्रतीक रहा है। वर्ष 2010 में विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से भारत सरकार इसे पुनः विश्व स्तरीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु सतत प्रयासरत रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय ने 40 से अधिक देशों के साथ शैक्षणिक व शोध सहयोग स्थापित किया है, जिनमें आसियान, बिम्स्टेक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देश शामिल हैं। यह नालंदा की ऐतिहासिक भावना ज्ञान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता का आधुनिक पुनरुत्थान है। विश्वविद्यालय साउथ एशियन स्टडीज, बुद्धिस्ट स्टडीज, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक शोध का प्रमुख केंद्र बन रहा है। 2023 में नालंदा के प्राचीन अवशेषों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए जाने से इसकी अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकित हुए, जिससे यह वास्तविक रूप से बहुराष्ट्रीय परिसर के रूप में उभर रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और कल्चरल डिप्लोमेसी के अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय आसियान, बिम्स्टेक क्षेत्रों के लिए साझा अकादमिक मंच बनकर भारत की विश्व गुरु की भूमिका को मजबूत कर रहा है।
मेरी सरकार से ये मांग है कि इसे वैश्विक रिसर्च हब बनाने हेतु संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अवसंरचना और परिसर के संरक्षण एवं डिजिटल पुनर्रचना को और सशक्त किया जाए। वैश्विक शोध नेटवर्क के साथ संयुक्त अनुसंधान को और बढ़ावा दिया जाए। परिसर के संरक्षण, डिजिटल पुनर्रचना और वैश्विक पर्यटन शिक्षा मॉडल को भी सशक्त किया जाए। नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्णोदय केवल बिहार या भारत का गौरव नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की साझा बौद्धिक विरासत का पुनर्जागरण होगा। बहुत बहुत डॉक्टर संदीप कुमार पाठक। थैंक यू वेरी मच सर। मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण, चिंताजनक और लंबे समय से उपेक्षित बुनियादी ढांचे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पंजाब के तलवाड़ा शहर और उसके आसपास के गांव जैसे हाजीपुर, गढ़शंकर, मुकेरिया, बहरामपुर और अन्य पिछले 40 सालों से रेल सेवा के वादे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्ष 1981 में घोषित इस 84 किलोमीटर लंबे नंगल तलवाड़ा रेल प्रोजेक्ट पर अब तक लगभग 2000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है, लेकिन आज भी स्थानीय लोग अंतिम चरण तलवाड़ा तक रेल पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस देरी का कारण स्थानीय लोगों को न केवल यात्रा में कठिनाई होती है, बल्कि इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास भी रुका हुआ है। मेरी सरकार से यह मांग है कि इस पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। श्रीमती गीता लय चंद्रप्रभा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के जिला मुख्यालय सहित प्रमुख कस्बों में सीवरेज सहित अन्य जल निकासी व्यवस्थाओं का अभाव है। जनपद के प्रमुख कस्बे जैसे बिधूना, छलदा, दिव्यापुर, फफूंद आदि में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने के कारण जगह जगह जल भराव की स्थिति बन जाती है, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जल भराव से उत्पन्न होने वाले मच्छरों एवं अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के समय इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास निकलने का पर्याप्त रास्ता नहीं होता है। स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को जल भराव की समस्या का सर्वाधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः आपसे निवेदन है कि सरकार द्वारा संचालित अमृत योजना या शहरी क्षेत्र में जल निकासी तथा सीवर से संबंधित किसी अन्य योजना के अंतर्गत औरैया जनपद के प्रमुख नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज तथा जल निकासी की सुविधाओं को विकसित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। It is now 6 p.m. If the House agrees, we may sit beyond 6 p.m. till the disposal of today's listed business and the special mentions permitted for today. Do I have the leave of the House to extend this sitting beyond 6 p.m.? Yes. Continue. अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा संचालन अमृत योजना या शहर क्षेत्र में जल निकासी तथा सीवर से संबंधित किसी अन्य योजना के अंतर्गत औरैया जनपद के प्रमुख नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज तथा अन्य निकासी की सुविधा को विकसित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। श्री रामचंद्र जंगरा। एक अति महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आजकल कृषि क्षेत्र में अति घातक कीटनाशक व खरपतवार नाशक केमिकल किसानों द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं, जो कृषि भूमि को अति जहरीला बनाते हुए प्राणी मात्र के लिए विनाशक सिद्ध हो रहे हैं। कुछ केमिकल तो इतने विषैले हैं कि अगर उनके छिड़काव किए हुए या डाले हुए स्थान से 1 सप्ताह तक गलती से कोई घास निकालकर पशुओं को डाल दे तो पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार आजकल किसान मेड़ों या सिंचाई के लिए प्रयोग होने वाली नालियों में उगे घास को किसी कृषि उपकरण से उखाड़ने की बजाय वहां पर उगे घास को समाप्त करने के लिए एक केमिकल का छिड़काव कर देते हैं। ये केमिकल इतना घातक होता है कि जहां छिड़काव होता है वहां जमीन स्पंज की तरह नरम हो जाती है तथा जमीन के नीचे 1.5 फुट की गहराई तक चूहा या सांप वगैरह होता है वो भी मर जाता है। कुछ दिन पहले एक किसान सुबह सवेरे खरपतवार घास छिड़काव करके चला गया। थोड़ी देर बाद एक चरवाहा वहां अपनी भेड़ें को चराने के लिए आ गया। वहां के घास को खाते हुए उसकी 45 भेड़ें मर गई। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके साथ उगे अनाज के पौधों में उसका कितना असर जाता होगा। जिस अनाज को पशु इंसान सभी खाते हैं उसमें कितनी विषाक्त और बीमारियां आती होंगी।
कृपया सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, किसान को प्राकृतिक खेती की तरफ प्रोत्साहित करे। श्री गोल्ला बाबूराव गारू। Before I start the special mention, I want to thank the BJP government and Health Minister Sri Nadda ji for starting an innovative program, Dr. Ambedkar Medical Aid Scheme, to the scheduled castes and scheduled tribes. The government is implementing Dr. Ambedkar Medical Aid Scheme to provide medical treatment to patients suffering from serious health problems relating to kidney, heart, liver, cancer, brain hemorrhage, etc. for SC and STs. It is a very good scheme for the poor SC STs. Under this scheme, 100% of the estimated cost of the treatment is given to the concerned hospital. But there are various limitations, and one of them is family income of SC STs should not exceed 3 lakhs only. Secondly, if one looks the money given for the various surgeries, treatment, it appears to be insufficient. For example, the following amounts are being given: the heart surgery 1.25 lakhs, kidney surgery 3.5 lakhs, cancer 1.75 lakhs, brain surgery 1.5 lakhs, kidney transplant 3.5 lakhs, spinal surgery 1 lakh. The rates for various surgeries are just a fraction of the real